people who are activity, Namaskar. their sugar levels can drop. Hello and welcome to this very special broadcast from ReTHINK India. I am Raghav Mittal. I am the Director Research and Programs out here. And I am joined by Dr. Surbhi Mittal. So we welcome you for today's orientation program. It's a kind of a primer. So we had released a video earlier regarding our very intent and purpose of creating this one of its kind program for nurturing the mesmerizing medicos of future. तो फॉर्मल बात करने से पहले ही आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, there is a purpose behind it. This is a docu-series on a very recent docu-series on Netflix, and it talks about the human word within, or as we can see without infringing any of the copyright acts and all, it's a very wonderful way of presenting and modeling the entire human body as a supreme machine. We all know that this is a technological era, and like we are connected so very well, like in a live mode through technology. So human body has also been modeled as one of the very finest machines. And fourth industrial revolution की हम लोग बात कर रहे हैं, और हम सभी में से जो लोग फ्यूचरिस्टिक मेडिकल प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये बात आई कि द पेडागॉजी ऑफ नर्चरिंग the futuristic medicos has to start from this first very important step of getting fascinated about being a medical professional. And this is the cornerstone of this entire program. As you all know, that ReThink India is an action cum advocacy think tank, and we straddle on a vast variety of community engagements across academia, industry, and government. So many requests started coming in from a lot of our participant schools ki, what are you doing? You're talking a lot about the futuristic frontiers ahead. You're working a lot on the institutional frontiers. You're working a lot on the principal level. You're working a lot on the faculty level. And also some of the programs which are touching the students. But what about the immediate concerns of the students? कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे my career directions over there. So you should also start some program which touches very very closely out there. तो ये बहुत समय से request आ रही थी, तो हमको लगा कि because I am being flanked by one of the, I would say, one of the very mesmerizing medicos herself, and who created a kind of a history by becoming one of the first female candidates to top the CBSE PMT examinations way back in 1998, which was the then NEET examination. So we felt, why not do something around medical sciences? Because आज अगर fourth industrial revolution में technology की convergence की बात अगर हो रही है, एक unified field की बात हो रही है, so there cannot be a better machine, a better use case than the human body. So medicos are the ones who tackle, who deal, who cure the human body at large. And the future of healthcare, as all the best brains and best consulting word is talking about, from healthcare to health, this transition would happen. So this entire program which we have chiseled, I will just come to the nuts and bolts of it all. So I just wanted to start with this docu-series of Netflix. I think for any medical aspirant, this should be, or a series like this. See, somewhere or the other, we have to get fascinated. We have to get, because a career in medical sciences is a lifelong one. Doctors are lifelong learners. They used to get, and they work in mission critical conditions more than the armed forces. Because in armed forces, things are planned. You plan the theater of war. You think about the collateral damage which you have to mete out to your enemy forces. But as far as So as far as the medical world goes, the medicos deal with life and death in a split of a second. Their decisions, they make all the transition out there. So वैद्य को भगवान की जो स्थिति दी गई है, that is so very important. And thanks to technology, the medicos of the future, and even currently, they are aided in a big way by technology. And the future doctors would be, I would, if you may allow, they would be medical engineers. There are programs out there which are
like in my own alma mater, IIT Kharagpur, they have a school of medical technology. So all the jazzy machines which we see, without which a doctors just cannot, without a CT scan or without a MRI, what is happening inside our body, the kind of, so that's where the role of physics come into play, and the kind of all the pathology tests which goes on using the blood samples, the urine samples. That's where all the chemistry, all the subjects which we study. तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो हमने नर्चर किया, ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स की दृष्टि से हमने प्रोग्राम नर्चर किया है. दिस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग मोरॉन biology, chemistry or physics alone. Yes, the fundamentals, the concepts, the precepts would be delivered well, because we ourselves went to some of the finest schools ourselves and we mastered them. But somewhere or the other उसका जो linkage है young learners के साथ आज why का problem है, और ये problem बहुत important है. If we can know कि मैं अगर titration पढ़ रहा हूँ, titration lab में कर रहा हूँ, तो उसका impact क्या है? What is its actual utilization in the real life? So all that applied aspect would be an integral part of it all. So as I showed you, this is a very lovely series. You should all watch it. Now Netflix has also lowered down its plans. Don't watch the other trash. There is good things everywhere. But this is one of the series which I feel will really fascinate you. अगर आपको medical career के प्रति कुछ अवधारणाएं हैं, stereotypes हैं, तो let's watch them. Because आज 10th का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है. Those who are aspiring कि मुझे कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है, and if biology is scaring you somewhere or the other, just watch it. And I really guarantee you that Netflix is not giving me any background commissions for that matter, but I got fascinated by this lovely docu-series out here, जो कि एक अलग perspective दे रही है. Because once we are fascinated about something, so we can go all the way. We can fight all the fears, and we can go all the functional fighting which is there. So pehla step which this entire program is going to do, this will be a kind of a 2-year-long program, and we have not touched upon because this is our maiden year. So hum log this is an orientation for the NEET program. We are targeting for NEET 2024. Because this is our maiden edition, we have been approached by a lot of schools. So हम लोग जो students 10th के बाद 11th में enter कर रहे हैं, and who are aspiring to be a medical professional. And I tell you that by the time you guys would be out of your medical school, the world would have changed much more. So the entire focus of this program would be to give you a kind of an orientation, so that ये जो वूका है, ये जो कोविड का क्राइसिस आया, एकदम से बहुत सारे चेंजेस आए, एंड माइंड यू दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ फ्यूचर. तो अगर हम ये वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी को अभी से if we cope it up, fundamental principles would remain the same, but जो changes हैं, they will help us to really become a kind of a futuristic medico. So this program, इसकी जो foundations हैं, the foundations are in future. We will give you from our vantage point, our studies, our research, give you some of the finest stuff apart from the fundamental principles. No doubt about it. There is no compromise on the principles. The physics, chemistry और mathematics जो सवाल लगाने हैं हमको, जो 90 सवाल बायोलॉजी के नीट में के इम्तिहान में आने हैं, जो 50 सवाल केमिस्ट्री के आने हैं और 50 सवाल जो फिजिक्स के आने हैं, all those things that we will train you like anything, but उसको we have to put it into a larger envelope of the fascinations of medical, because सवाल लगाने के लिए जो inspiration चाहिए वो constant होनी चाहिए. I think I would pass on to Dr. Surbi now to add on to the brass tacks of it all. And today our third grand master of this entire program, मैं formal परिचय भी दे दूं आप सभी के साथ में. मेरा नाम राघव मित्तल है और मैं मूलतः like ReTHINK India के परिचय में तो लोग जानते हैं, but I'm a graduate from IIT Kharagpur, 2004 batch. I studied computer science and engineering out there. So I am a social entrepreneur and I am the director of research and programs at ReTHINK India. Dr. Surbi is the president at ReTHINK India Institute, and as I told that she's a medical graduate from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And our third grandmaster, who is the pivot of it all, is Gaurav Mittal, and he is a IIT Roorkee graduate.
class of 2006, and he specializes in the domain of chemistry. So biology और chemistry को अगर देखा जाए तो वो 2/3 से ज़्यादा 3/4 it creates a kind of the core of it all of biology. और जब हम chemistry पढ़ते हैं medical के लिए तो वो biochemistry हो जाती है. The chemistry has to be interpreted from a biological perspective because human body की जो chemistry है, जैसे 120 के करीब एलिमेंट्स आ चुके हैं और केवल 23 एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में एक्ट करते हैं. सो समवेयर और दी अदर द केमिस्ट्री फ्रॉम द सब्जेक्ट वही है, एनसीईआरटी का करिकुलम वही है, पर जो नीट का इम्तहान है, जो वहां के दिग्गज प्रोफेसर्स इम्तहान सेट करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के डॉयंस, क्योंकि दे डील विद लाइफ एंड डेथ, तो वो केमिस्ट्री आपको बायोलॉजिकल सिस्टम्स की दृष्टि से समझनी होगी. बायोलॉजी को भी ह्यूमन बॉडी की तरफ they try to mold more. Because yes, there is botany, there is zoology, there's a whole lot of universe in biology itself. Or physics, yes, because lot of physical Doppler's effect a doctor has to understand. Agar unko sound ka system, because there is a lot of physics in the human body as well. So मैं डॉक्टर सुरभि से कहूंगा वो अपनी कुछ बातें यहाँ पे रखें, फिर then we will invite गौरव मित्तल. एंड जो 2-3 बातें और हमें करनी थी, जो 3 चरणों में ये प्रेजेंटेशन है आज की, फिर आपके प्रश्न हम लोग लेंगे. कि फैसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फैसिनेटेड नहीं हो डॉक्टर बनने के लिए तो यू कैन नॉट सर्वाइव एंड सस्टेन इन दिस एंटायर फील्ड. फैसिनेशन इतना भी है कि मेडिकल स्कूल के 5 ईयर का जो रिगर है वो क्रॉस करना है. यू हैव टू सी ब्लड, यू हैव टू सी कैडेवर्स. तो अभी से these 2 years of preparation are like you become junior doctors. कि अभी से हम अपने आप को प्री मेडिकल स्टूडेंट की तरह देखने लग जाए. We assume ourselves as doctors, as junior doctors. घर में बीपी मशीन है तो भाई बीपी मशीन का तिया पांचा करना, I am using a colloquial language, कि उसके जो terms हैं, what is systolic, what is diastolic, let us have an applied understanding. घर में शुगर का मशीन है तो can we operate and can we read the readings out there and Google it out and find out for ourselves and get fascinated कि ये जो vital readings हैं on the basis of which how the medical profession strives. Because once we are anchored, once we are hooked on, once we are fascinated with a discipline, I think सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा. पढ़ाई बिल्कुल it becomes a cakewalk because you have immersed yourself into that. So और फिर fears की जो बातें हैं, बहुत सारे myths हैं, वो second part of the presentation है कि नीट पता नहीं क्या है क्या नहीं है. Lots of fears are there, so we will be demystifying a lot of fears. और lastly जो सबसे important है, the functional aspects of it, the nuts and bolts of it all, how the curriculum is structured, class 11th and class 12th. NEET is directly mapped to the NCERT curriculum largely. और किस तरह से NCERT की किताबों को, अगर आपके घर में lawyers हैं, तो जो reading होती है first principles की reading, law books की, how the IPC is read or how the CRPC is read and interpreted. So somewhere or the other medical sciences force you, because you have to act in the split of a second. आप लोग बहुत सारी artificial intelligence की बात सोचते होंगे, but we at ReTHINK India use the term called augmented intelligence, which is artificial intelligence plus human intelligence. And that is the AI which is required, because आप कितनी भी बड़ी machines ले लें, when a human brain takes a decision in a life and death situation in a split of a second, the trained medico, तो वो जो functional aspects हैं, that is what this entire program would be all about. So Dr. Surbhi, yeah. So friends, welcome aboard this journey, this roller coaster ride for nurturing for NEET 2024. What is it to become a doctor? A doctor, my friends, is a commando. He is acting 24/7. His brain is working, his or her brain is working 24/7. It's a profession which is not just a 9-to-5 job, but it's a way of life. You're living that ethos, you're living that values, and that is what is the oxygen of a doctor. You know, to see it all happening right in front of your eyes, that when the patient is healed, the smile on the face of the patient is the reward for the doctor. It's an exciting journey, and it begins with your NEET stage. And this particular program, friends, is to orient and I should say indoctrinate, the essential values, and also, of course, the necessary preparation in our future medicals. So as we say that you are already pre-medical students, if you're aspiring for NEET, you have embarked on, first of all, let me congratulate you for taking this great decision to go the medical way, to go the NEET way. And this is a journey full of hard work,
but full of excitement, enthusiasm, and the passion has to be there. That's why the important word fascination. Once you know what the journey is all about, once you know what you're going to, learn in these 5 years, and what you're learning in class 11th and 12th, and what is its relevance with the medical journey, with the medical studies, with the medical career, you will become a self-learner. And that is our goal, to imbibe and inculcate the self-learner in you, to instill those learning attributes, how you're going to pick those concepts. Say, for example, if you are studying the frog in class 11th biology, do you know in your physiology first year, you'll be doing nerve experiments with the frog itself. It's so very important to understand the human biology. When you study the various systems, you would be able to relate that each and every chapter, each and every concept which you are mastering here will be extrapolated to such great extent. And that's the basis on which your anatomy, physiology, your pharmacology, and internal medicine, surgery would be based upon. So MBBS, the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, is the goal which we all say, but it's just not. It's just the beginning of a grand story. So the journey to become a doctor, the commitment to serve, and the empathy and the skills all go in together. So before I come and invite Gaurav, because he's a trained coach in the entire entrance examination industry, a doyen of 15 odd years of spectacular experience, I would like to add upon the fascinating frontiers of this entire program. Functional aspect में कहूँगा बहुत सारे हमारे गणमान्य शिक्षकगण भी हैं, the faculty of biology, that this entire program would be in tandem. Without their hand-holding, this program won't be a success. So that is the bottom line of it all, कि school की जो baseline foundation है, उसके ऊपर हम लोग तो छोटा सा supplementation का प्रभाव कर रहे हैं, and we want to phase ourselves out gradually from this program. Idea केवल यह है कि हमारे जो schools हैं, they are the seats of knowledge and they are the seats of training, and the kind of phenomenal academic experience which our faculty members have got. But somehow or the other, because a lot of this commercial space has come into place, so our faculty are losing their agency out there. So this program is also towards restoring that agency. Last year, we had initiated a precept called competition coaches, and it is a step further towards that how we can create a kind of a ecosystem, a learning ecosystem, whereby the school education and such kind of programs, they can work in tandem, and the students can really fulfill, I would say, their dreams for entrance examinations. Otherwise, what happens is in the class 11th, after the class 10th, there is a disconnect which happens with the school education. बच्चे coaching classes में जाने के कारण laboratory के experiments नहीं करते हैं, and when they reach to an engineering school or a medical school for that matter, they find so much of a problem because they have got disconnected from those 2 very vital years of senior schooling. So technology has enabled it in a big way, and as you can see on the back, see, this program has been timed as a late evening kind of a program, 8 to 9:30 p.m. so that even the classes, even the faculty members who would be recommending their students to be a part of this program, they are also most welcome to join in and also contribute. So this is a kind of a very unique kind of a deliberative program, and a lot of technological baseline would be there. For example, Dr. Su, we would be having sound archives, whereby the summary of the programs, because that's the technique which he used to score the highest, because abhi bhi voice is something which should, memory is more about voice, visual aspect is okay. So there would be voice notes to you as a part of this program. We would be giving you a kind of a tech tool like Quizlet, where all the terms and terminologies, because biology अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो इतनी complex है, और उसका comprehension करने के लिए terms को समझना, terms पर आधिपत्य होना बहुत आवश्यक है, और ये सारी की सारी Latin की terms हैं, तो उनका pronunciation और spelling दोनों के साथ दोस्ती करने के लिए एक उसको खेल बनाना पड़ेगा, उसको एक in a beautiful fashion we have to work around that. So that is, a lot of technology will be helping you. The recorded sessions will be with you. The diagrams, how to draw. Abhi to khair MCQs hote hain to, but also you have to draw the diagrams in board examinations, so that how you can create mind maps. So that is what would be talked about that. And fascination हम continue रखेंगे. ये जो sessions हैं, ये आप समझिए कि 1.5 घंटे की picture है, बहुत interesting है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपनी ऊर्जा, our energy should be so high कि आप यहीं पे बहुत कुछ याद कर लें. The idea would not be कि आपको फिर से कुछ करना है, but बहुत कुछ आप यहीं पे
रिपीटेटिव वे से इट गेट्स मेमोराइज्ड बिकॉज डॉक्टर्स मेडिकोज उस समय किताब पुस्तकेस्तु तू या विद्या परहस्तगतम धनम आपदकाल प्रपन्ने न च विद्या न तद धनम. ये संस्कृत की सुभाषितानी आप 10वीं के छात्र एंड द टीचर्स विल ऑल बी नोइंग इट. So a lot of memorization is so very important because then only you can deliver, and that's what the NEET examination is all about. 3 घंटे में तू ना सारी बातें सही बताया कर. तो 3 घंटे में वो जो एग्जाम है what it all tests. So it is not just the तो fascination में we will be trying to give you कि are you watching Dr. House somehow or the other, the diagnostics champ out there. So जब हम एक हंसी खेल में इट्स 24 मंथ और नीट 2024 का एग्जाम अब 17 तारीख को इस साल का नीट हो रहा है. सो 2024 में किस तारीख को होगा तो डरने की आवश्यकता नहीं है. कुछ बच्चों को डर लग रहा है कि 17 तारीख का नीट एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए. अरे क्यों कर दिया जाए भाई, इतना बड़ा कोई सिलेबस तो है नहीं. द होल आइडिया इज दोस्ती उसके साथ कैसे हो जाए. तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेते हुए बिकॉज देयर इज अ होल इंडस्ट्री अराउंड इट. तो मैं गौरव को आमंत्रित करूंगा हु इज आवर पिवटल ग्रैंड मास्टर इन दिस एंटायर रिगरस प्रिपरेशन आउट देयर, अ जायंट इन हिज ओन स्ट्राइड. कि बहुत सारे ऐसे फियर्स कौन से हैं जो एक एडोलेसेंस को, जो इन टीनेजर्स को डर लगता है, अरे भैया वो गला सूख रहा है, ये कौन सा एग्जाम आ गया. तो गौरव आपकी कुछ प्रस्तुति हो जाए जिससे कि वी कैन गिव इट अ बैलेंस फेज. गौरव मित्तल, या. Good evening, all of you. राघव सर एंड डॉक्टर सुरभि ने आपको सारी चीजें बता ही दी. और जो बेसिक चीज सबसे द फंडामेंटल थिंग व्हिच डॉक्टर सुरभि सेड that you are embarking a journey of self-learning. Now, since you have decided to be a doctor, so be prepared that it is a decade-long journey of self-study. 2 years of preparation, 5 years of MBBS, and then your postdoctoral and everything. So, obviously, if you are into self-learning mode, then only you are going to succeed in this journey, and that is my experience. I will say, based on my experience of training thousands of students in my 15-year-old career, these examinations are what to say, एक डर बना दिया गया है कोचिंग इंडस्ट्री के तरफ. दैट इज फॉर श्योर. और अगर आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर जिंगल आजकल चलती है, वेरी वेरी पॉपुलर जिंगल, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से. अ जीनियस मार्केटिंग एक्सरसाइज, very genius marketing exercise. But again, the fundamental is something different. Again, it is the dishonest jingle. The honest jingle is पढ़ लो चाहे किसी से और selection होगा खुद ही से. So I think Mr. Raghav, he also went to a number one coaching of his time. I also went to Kota, number one coaching of my time. Dr. Surbhi also went to that number one coaching of her time. And believe you us, the selection is solely dependent on the self-study part. No coaching, no teacher, no one can help you out if you are not helping yourself. And see, in class 11th and 12th, okay, we have the options. Parents are very much concerned about the career part. So, okay, one coaching, Papa, I am not able to understand. मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही. Okay, बेटा, हम एक extra tuition लगा दें. हमने वो तो एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दी. पापा ये समझ में नहीं आ रहा. अच्छा बेटा, हम दूसरा टीचर का ट्यूशन लगा दे. तो तीसरा टीचर का ट्यूशन आ जाएगा. एंड देयर इज नो एंड टू इट टिल द टाइम वी डिसाइड टू स्टडी ऑन आवर ओन. एंड दैट्स द फंडामेंटल फॉर अ सक्सेस इन दिस एग्जाम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सिलेबस फॉर नीट इज वेरी फंडामेंटल. इट्स solely dependent on NCERT. And I will say the physics and chemistry part particularly, the level of the questions are on the very basic fundamental premise. They are not into the highest level of application part, which probably is asked in the JEE advanced examination. So the basic definitions are there, basic fundamentals are there, and if you are devoting your time for self-study, you will definitely succeed. There is no doubt. So again, self-learning, because after 2 years, when you are into the college, you are on your own.
अभी पापा आपका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा देंगे, एमबीबीएस में एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लगेगा, एमडी के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लगेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और अभी केवल एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 6 किताबें हैं, लेकिन आगे जाकर के जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो 6 किताबें 300 पेजेस की होती है एक किताब, आगे जाकर के एक किताब 2000 पेज की होगी, और न जाने कितनी किताबें हमको पढ़नी पड़ेगी। एंड देन अगेन being a doctor is a lifelong learning, because now see, COVID came across, no one knew what will happen, and in a record time we created the medicine, the vaccines. mRNA technology came across, Pfizer vaccine was there, that technology was untested, but the engineers and the doctors came out with the solution to this problem. So there will be newer and newer diseases, and a newer solution has to be given by the doctor community itself. So we have to understand why we are studying. Now, if I come to my particular subject, why we are studying chemistry. Now, for example, if you see, I will give you some historical perspective. See the life expectancy when India got independence, that is 1947. And see the life expectancy, Google it, it's just conjecture. And see the life expectancy after 1970s, global life expectancy. Second thing, I give you one pointer. See the growth of the pharmaceutical companies, if I say, pre-1970s and post-1970s. What happened was, during 1970s, the bonding theory, the molecular level, we understood the molecular level. And that's how more and more medicines came across. So the concepts of chemistry and physics that we are going to study, they are going to be applied in your medical field, and that has revolutionized the medical science. So that's the reason why we study chemistry and physics, not only biology. Biology will give you what are the diseases, but chemistry will help you understand that what are the causes, what are the molecular causes of these diseases, and how are we going to attack. So these are very many things have been told by Dr. Surabhi and Mr. Raghav. I will just say there is only one thing, पढ़ लो चाहे किसी से, selection होगा खुद ही. That's it. That is the bottom line. अगर आप खुद से दिन का 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हैं अगले 2 साल, no one is going to stop your selection from me. और किसी के प्रेशर में नहीं आना, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है. दूसरी बात यह है कि जो प्रोग्राम है, आई थिंक वी विल बी ऑल बी स्टडीइंग फ्रॉम योर रूम्स एंड फ्रॉम योर होम. दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फुल ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर. इफ यू आर विद योर फैमिली, योर प्रेशर इज रियल. आपको टेंशन हो रही है, आपकी मम्मी आपका चेहरा देख करके बता देंगे कि टेंशन हो. आप मम्मी के पास जाकर के बैठ जाओगे 10 मिनट के लिए, मम्मी परेशान हो रहे हैं, एंड आपकी टेंशन रिलीव हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट इफ यू आर अवे फ्रॉम योर होम, घर से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, फोन पर बात करने से यू विल नॉट बी एबल टू रिलीव योर. और ये जो कंपटीशन की तैयारी है, इट हैज टू बी स्ट्रेस फ्री, एंड फैमिली इज द बिगेस्ट मॉरल सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम. So that's why this program is designed in such a way that you don't have to go anywhere else. You are studying, you are at your home, you are with your parents, and they are going to take care of the very crucial emotional support part. मेहनत आप करेंगे, लेकिन उसमें जो भी समस्याएं, जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव आएगा, तो आपके पेरेंट्स के बस आप चेहरा देख लो ना, उनका काफी टेंशन दूर हो जाए. That's it. और बाकी हम आगे चलते चलते बहुत सारी चीजें. आई थिंक इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस बोलता है. पर गौरव ने एक बड़ी ही विचित्र डाइकोटोमी हमारे सामने रख दी है कि अगर पढ़ लो चाहे किसी से और सिलेक्शन होगा हम ही से, तो फिर हमारी जरूरत क्या है? व्हाट इज द रीजन डेटरे दैट वी आर ओवर हियर एंड ऑफरिंग दिस प्रोग्राम? तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि कोचिंग इज नॉट मेकिंग यू क्रैम. ये जो रट्टे लगाने की बात है, पहाड़े रटना भी ठीक है, पर आजकल क्रिएटिव थिंकिंग, आज ही त्रिपाठी साहब का वक्तव्य आया है कि कक्षा 10 का जो इम्तिहान है सीबीएसई का, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है. एंड द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द वे मशीन लर्निंग इज हैपनिंग, तो द एप्लीकेशन साइड ऑफ द होल स्टफ इज इंप्रूविंग अपॉन.
तो दैट इज वाई हमने कहा कि कक्षा में, क्लासरूम्स में, व्हेन योर बायोलॉजी टीचर, फिजिक्स टीचर एंड केमिस्ट्री टीचर आर टीचिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, और यही फर्क है थोड़ा सा सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में और एक अप्लाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. अब तो यूनिवर्सिटी का CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम भी प्रारंभ हो गया है. सो when biology, physics, these are fundamental subjects. आप नोबेल प्राइज देखिए तो 6 नोबेल में there is a Nobel Prize for medicine, there is a Nobel Prize for physics and chemistry. तो बहुत ही फंडामेंटल बातें की जाती हैं, और ये फंडामेंटल फाउंडेशंस जो हैं एकेडमिक दृष्टि से, जो गौरव ने कहा कि अवेयरनेस के लेवल पे उसकी जो दक्षता है, मास्टरी, अब टाइट्रेशन ही नहीं समझ में आएगा, पीएच स्केल ही समझ में नहीं आएगा, तो आप कहाँ से तो ब्लड टेस्ट करोगे, कहाँ से प्रेगनेंसी टेस्ट के नए किट्स को डेवलप करोगे. तो वो फंडामेंटल जो लेयरिंग है, जैसे कि अल्फाबेट्स, न्यूमरेसी और लिटरेसी हमारी प्राइमरी कक्षाओं में होती है, तब जाके हम उसके ऊपर जनरल अवेयरनेस और स्किल सेट की बात करते हैं. तो मेडिकल जो कोर है, इट इज नॉट अ टेक्नीशियन वाला कोर्स है कि भाई एक मशीन है, आप एमआरआई के ऑपरेटर हो, पर एमआरआई क्यों चल रही है, उसके पीछे टेस्ला का नियम क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है तो उसका इंडक्शन इफेक्ट कैसे आ रहा है, वो जो टेस्ला की टर्म्स है उसका मतलब क्या है. तो अब इतने सारे पैथोलॉजी में टेस्ट होते हैं, तो उनका सारा जो यूनिट्स हैं उसको समझने के लिए केमिस्ट्री तो चाहिए. केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स चाहिए. जितनी सारी मशीन्स हैं, चाहे वो एमआरआई की है, एक्सरे की है, एक्सरे इफेक्ट कैसे हो रहा है, और कैसे आप अगर एक गाइनोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कि प्रेग्नेंट लेडी को एमआरआई के पास नहीं लेकर जाते हैं, और नॉन इन्वेजिव जो सबसे ज्यादा अल्ट्रासाउंड का इफेक्ट है, डॉपलर्स इफेक्ट के बेसिस पे इमेज बन के आती है, तो आप फिजिक्स का एप्लीकेशन उसमें देखते हो. और मेडिकल साइंस से बड़ा और बढ़िया कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है. और जैसा कि गौरव ने कहा कि टेक्नोलॉजी, जो जेई का एग्जाम है, आईआईटी जेई का जो एग्जाम है और नीट का एग्जाम है, उसमें एक फंडामेंटल फर्क क्यों है, बिकॉज डॉक्टर्स डील विद अ परफेक्ट मशीन, ऑलरेडी परफेक्ट मशीन, बट टेक्नोलॉजिस्ट लाइक अस एंड गौरव, सो जब आप इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आप मशीन बनाते हो, तो वहां का एक जो सोच है, वहां का जो चैलेंज है वो अलग है. और मेडिकल साइंसेज में यू आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन अ नियर परफेक्ट मशीन. इनफैक्ट टेक्नोलॉजिस्ट लर्न अ लॉट कि कैसे हमारी आंखें काम कर रही है, सो दैट वी कैन मॉडल इट बैकवर्ड्स. हम लोग कंप्यूटर साइंसेज में न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो ब्रेन स्टडीज हमें ये बताती हैं कि हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोग्राम, तो हम कंप्यूटिंग मॉडल्स में मेमोरी को वैसे लेकर जाते हैं. सो इंटरडिसिप्लिनैरिटी इज कमिंग इन अ वेरी वेरी बिग मैनर. तो नीट का जो चैलेंज है ये ऊंचा और नीचा नहीं है. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. इट इज जस्ट डिफरेंट. जैसे लॉ के एग्जाम में देयर इज अ लीगल प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग, सिमिलरली डॉक्टर की भी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ केसेस इवन अ सुपर स्पेशलिस्ट सीज, तो वो बहुत सारे यूज केसेस उसके पास में आ जाते हैं. दो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कमिंग इनटू प्ले. तो इस प्रोग्राम में हम करने क्या चाह रहे हैं कि वी विल कीप यू फैसिनेटेड फॉर ऑल दिस लॉन्ग जर्नी. बोर नहीं होने देंगे. सर बोर हो गए, नंबर 1. नंबर 2, yes, the entire academic material would be dealt with. उसको कहते हैं in higher instructional level just to familiarize you over there. But उसको याद करना, उसको समझना और उसको application level तक लेकर जाना, that is a task and that is self learning. But self learning कैसे करनी है, किन terms को हमें याद रखना है, किन terms को समझना है, और किन फिनोमिना को प्रैक्टिस करनी है, कितनी करनी है, जैसे कोच का काम होता है. इट इज द ब्यूटी ऑफ एथलीट. वही अब कि जैवलिन थ्रोअर है हमारे चोपड़ा साहब ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो वो तो उन्होंने ही जीता, उन्हीं की मेहनत थी, उनको ही प्रैक्टिस करनी थी, पर उनके जो कोच या कोचेस रहे उन्होंने उसकी ट्रिक्स टिप्स, तो दोनों ही बातें जरूरी है. वी डोंट क्लेम. तो जो बात गौरव ने कही कि हाँ सिलेक्शन हमारे से ही होगा, रैंक हमारी एफर्ट्स है, अगेन डॉक्टर सुरभि कैन वाउच फॉर इट, आई कैन वाउच फॉर माई सेल्फ, एंड इवन गौरव विल कैन वाउच कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर ओन प्रैक्टिस व्हाटएवर यू डू. दिस प्रोग्राम वुड जस्ट गिव यू अ काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन, अ हैंड होल्डिंग, अ सपोर्ट ओवर देयर, और एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि बहुत आवश्यक है. एंड यू नेवर नो इन दिस चेंजिंग टाइम कि भाई एकदम से अभी यंगस्टर्स के बीच में एक प्रॉब्लम हो रही है कि अरे सीबीएसई इज चेंजिंग वेरी फास्ट, नोटिफिकेशन चेंज हो रहे हैं. भाई दिस इज व्हाट द रियल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. वहां पे अगले दिन क्या होने वाला है
कोरोना का नया वेरिएंट आज डिस्कवर हो गया तो एकदम से सारे प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाएंगे, एक नया मंकी पॉक्स आ जाएगा, तो हमें वन ऑफ द कोर थिंग, जो इमोशनल सपोर्ट तो एक बेसलाइन गौरव ने बात कही, बट जो प्रोफेशनली, बिकॉज डॉक्टर्स हैव टू बी इक्वानिमस इमोशनली, you are dealing with life and death situations and you are dealing with so much of pain. तो वो जो सारी की सारी जो एक intellectual understanding है, we as professionals, we someone who are engaged professionally, we are, Dr. Surbi is a practicing doctor, I am a practicing technocrat, so we are not just academicians alone, we have a linkage with the real world which is happening, and in this program we will make you link with your parents. और जैसे कि आपने अगर दंगल मूवी देखी हो, तो अगर आपके पिताजी सुबह 4 बजे आपको दौड़ाने के लिए तैयार हैं और वो खुद उस्ताद थे, तो उनको बाहर के किसी कोच की क्या आवश्यकता थी? आपका जो टाइम टेबल है लाइफ का, वी विल ट्राई टू मॉनिटर इट, कि भाई आप अपने बायोलॉजिकल रिदम के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो. डॉक्टर्स के आप अगर देखेंगे हॉस्पिटल्स में, तो दे हैव अर्ली मॉर्निंग राउंड्स, 8 AM you will see a white coated doctor. If your family, if you have observed any of the medical facility, तो वो भी बातें जो अंदर की बातें हैं, that will keep you inspired, because perspiration करते करते inspiration बहुत चाहिए. I think this is the functional aspect of it. बाकी बातें हमने स्लाइड पे रखी हैं, and now we will open for questions and all. कि एक तो एक collective power pack teaching होने जा रही है. Collective power point teaching का मतलब ये है कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है, डॉक्टर सुरभि इज अ डॉक्टर, आई एम अ टेक्नोक्रेट. कुछ सब्जेक्ट्स वी वुड बी टीचिंग यू कलेक्टिवली. कैसे वो एनसीईआरटी की जो किताब है उसकी जो रीडिंग है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स रीडिंग, अगर हमने वो सीख ली तो बहुत सारी बातें, आवर ब्रेन गेट्स प्रोग्राम्ड ओवर देयर. तो वी some chapters I and Gaurav would be teaching collectively, some chapters Dr. Surbi and, so हम लोग ये चाह रहे हैं कि एनर्जी में एक 2 टीचर कॉन्सेप्ट वी आर ब्रिंगिंग इन, बिकॉज 1.5 घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर वो एनर्जी मेंटेन कर पाना और ऑब्जर्व करना एक एक स्टूडेंट को कि वेदर the transmission is happening well or not, because that is our core purpose, ki it should reach you. Lot of questions and answers, lot of back-end technology, so that हम लोग pinpoint कर सकें कि कहाँ आप अटक रहे हो. So that is one. Then real time concept level quizzes. जैसे आपका 12वीं में 22 चैप्टर्स हैं, दोनों सालों को मिला के, बायोलॉजी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, वो प्रधान विषय है, कि 10 यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं. एट द एंड ऑफ द डे एटोमाइज्ड लेवल जो है, कि कॉन्सेप्ट लेवल पर ही ये एंट्रेंस एग्जाम्स जो एलिमिनेशन एग्जाम्स हैं, दीज आर मेनली एलिमिनेशन एग्जामिनेशंस, तो उस पर आपको ट्रिकी एक कॉन्सेप्ट एटोमाइज्ड और दूसरे कॉन्सेप्ट को मिलाकर दे आस्क यू, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग होती है. तो ये हम लोग थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कई बार फिजिकल क्लासरूम्स में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज हम लोग स्क्रीन के सामने ही होंगे, हमारे पास मोड्स होंगे, तो वी विल बी एबल टू डू कॉन्सेप्ट लेवल क्विजेज ऑल्सो, जिससे कि तुरंत समझ में आने लगे, अच्छा दिस इज व्हाट यू आर मीनिंग. बिकॉज कितना भी संवाद होगा, कितना भी कॉन्वर्सेशन होगा, जैसा कि गौरव ने कहा, एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर न्यूरल नेटवर्क ऑफ द होल सब्जेक्ट मैटर हैज टू बी इन योर ब्रेन. आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो आप स्वतः करेंगे. वी आर जस्ट कैटलिस्ट ओवर देयर इन दैट स्पिरिट. एंड इसमें हमने एक बात ये भी कही है कि विद लिंकेजेस टू मेडिकल स्कूल स्टडीज, क्योंकि ये न्यूरल साइंसेस की बात है कि अगर आप किसी प्रिसेप्ट को, उसका एक्सट्रापोलेशन अगर आप दे देते हो कि भाई देखो ये आपको यहाँ पे यूज होगा, आपको एक रियलिटी दिखा दी जाए. एब्स्ट्रैक्टनेस बहुत सारी होती है, पर उस एब्स्ट्रैक्टनेस को रियलिटी से जोड़ देंगे तो वो स्मृति जो है वो दृढ़ हो जाएगी. दैट इज व्हाट द मेमोरी विल गेट रिफाइंड ओवर देयर. The timelines we have keep post dinner या pre dinner, we would really expect एक lifestyle correction for all the students. It is not advisable even medically, because आपको अगर डॉक्टर बनना है तो you have to be a healthy person yourself. You have to take care of your health yourself. So till 7 o'clock you should have your dinner. Your parents, obviously, as Gaurav said, that they will also be coaching, और वो करते ही हैं, तो उनका योगदान तो सर्वोपरि है. तो 8 to 9:30, जिससे कि आपकी जो रात की स्टडीज है, व्हाटएवर यू विल बी स्टडीइंग, 1-1.5 घंटा इसके बाद में अगर आपने मेडिटेट कर लिया, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गो ऑटो प्रोग्रामिंग. ये न्यूरल साइंसेस कहती है, थोड़ा हमने रात का समय इसलिए रखा कि जो भी आप सुनेंगे इसके बाद फिर आपको कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखनी. अगर हाँ, तो जो सुना यहाँ से वो ऑटोमेटिकली डीप आपकी मेमोरी में चलता चला जाएगा. आपका 8 घंटे आप उसका चिंतन मनन कर रहे होगे. सो एंड इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल बी गेटिंग अप, तो quick recall will start happening, and this is what programming the mind is all about. And recapitulation is a core part of it all, because
करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, दैट इज द, एंड दिस इज व्हाट कोचिंग इज ऑल अबाउट। आप 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ रहे हो तो कोच क्या करता है, कितनी बार MS सुब्बलक्ष्मी अगर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गा रही है, तो वो एक ही स्वर का अभ्यास ही तो कर रही है, तो वही मुख्य है। एंड डाउट क्लियरिंग, हल्का फुल्का डाउट क्लियरिंग इन द क्लासरूम सेशंस, वो क्वेश्चनियर से आएगा। और हम लोगों ने जो रखा है, इसका प्रस्ताव है कि 3 दिन बायोलॉजी ऑल्टरनेट डेज एंड 2 दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री, जिससे कि हम सारे मसौदे को बड़े सुंदर तरीके से, और कई बार होगा तो शायद कोई इधर की पिक्चर देख ली, कोई उसकी बात कर ली, सो दैट वी रिमेन फैसिनेटेड, दैट इज द कोर ऑफ इट ऑल। और ये पीयर एंड प्रॉक्टर्ड लर्निंग, हम लोग डाउट क्लियरिंग में हम ये कहते हैं कि जो हमने कॉलेजों में देखा कि हमारे शिक्षकों से ज्यादा हमारे सहपाठियों ने हमें सिखाया, तो ये अगर हम अभी से, डॉक्टर सुरभि अभी भी केसेस आते हैं तो शी डिस्कसेस विद अ लार्जर पैनल, तो जो डेलिबरेटिव अप्रोच है, अरे यार मुझे सिखा, व्हाइल वी आर कंपीटिंग इन द नेशनल एग्जामिनेशन, पर हमारे ये जो बैच के लोग हैं हम आपस में डेलिबरेट कर सकते हैं। कई बार पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो हमारा सहपाठी कोई हमारे डाउट को जल्दी, तो ऐसा हम एक टेक पैनल रखेंगे, हम व्हाट्सएप या मोबाइल फोन तो एसेंशियल है, आप लोग 11वीं कक्षा के स्तर पर आ गए हैं, सो peer learning is more, we will be observing it wherever something is going astray, we will be intervening, but peer learning को हम बहुत importantly, और accountable है, digital है, तो आपके टीचर्स भी उसमें हैं, तो एक बड़ा पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे होता है क्लास, अरे तुम्हारे टीचर ने ये नहीं सिखाया, अरे टीचर ने तो सारी फाउंडेशन ही लिए करी है, उसको उसके आगे लेकर जाना, उसको बिल्डअप करना, एंड टीचर्स वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, सो दैट बैक एंड फोर्थ। और आहर्यता यह है कि एक विद्यालय से हम 3 ही बच्चों को ले पाएंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम अक्रॉस द नूक एंड क्रैनी ऑफ द कंट्री, वी हैव लिमिटेड टाइम एट आवर disposal, there are a lot of other commitments, so 3 students will become a kind of a catalyst back in their classrooms, and they will bring that excellence out there. And the application forms and shortlisting का process हमने स्कूल के लेवल पे रखा है, we are not expecting the linear scale of competencies कि आप इतने परसेंटेज वाले हो तभी आप यहाँ आओगे। हमने विद्यालयों को कहा है कि प्रिंसिपल और आपके फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स मिलकर, क्योंकि आज ना जो इवैल्यूएशन है, जो असेसमेंट है, वो 360 डिग्री होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट कि 3 घंटे में आपने कुछ इम्तहान, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो वैल्यूज चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो एक डॉगेडनेस चाहिए, आप शायद 80% भी हो, आप 75% भी हो, पर आपके पास अगर वो वैल्यूज हैं, वो मेहनत करने की ताकत है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि आप 3 खेमों में 3 बच्चों को 3 स्तरों पर विभाजित कर लीजिए, एक टॉप नॉच ब्रैकेट से, एक मध्यम से, और एक एस्पायरिंग। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो एस्पायर कर रहा है, किसी कारण से उसका लट्टू नहीं चल रहा है, कोई स्टार्टर की जरूरत है उसकी ट्यूबलाइट को हल्की सी, बाकी सारूच है, तो वो स्टार्टर देने के लिए हम यहाँ तैयार हैं, वी आर रेडी टू टेक ऑन दैट चैलेंज आउट हियर। So this is what is the overall schema, and it will evolve. This is not a kind of a cram school we are trying to make, but we will teach you the tips and tricks of cramming also, कि फ्लैश कार्ड्स बना के वो जो टर्म्स हैं उसको घोटना कैसे है, उसकी स्पेलिंग को कैसे हमें साथ में रखना है, what all tricks we picked up with our grand gurus all through. And very important, what you say is the root studying of the word. You know, these terms have roots. If you know the meaning of the roots, you can link these terms, and if somebody throws a new term to you, you will say, I know the meaning, because you know the meaning of the root. That's the thing. So let's come to, we have very few participants left out here, so if there are any questions, comments, anything, so this is just an experimentation we are into, but वो कहते हैं कि प्रयोग से ही एक आगे की नई सृष्टि होती है। So any questions, any comments, you're most welcome. Yeah, an open house we can have for 5-10 minutes. Yeah. Madam Shashi Sirohi, ma'am, you can introduce yourself and also we can discuss. Anybody for questions? Gaurav, you have any counter, matlab any add-on, just to make it a complete presentation, if you have. Everything is covered in a very nice fashion, and I think we should embark on the journey. Everything is covered. Perfect. And the idea of the program, that why we are starting, the philosophy behind it, because there are a lot of cram schools, there are lots and lots of coaching institutions, commercial coaching institutions, they are running. But the philosophy behind this program is completely different. So we want to make the linkages of the studies that we are going to do in class 11 and 10, because I also know that when I'm
और ये नहीं समझ में आता था क्यों पढ़ रहे हैं, why we are studying. If we can, we will try to teach you that ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसका यूज क्या आने वाला है फ्यूचर में. Obviously we will not get into that depth. ये हम PhD लेवल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक आपको प्राइमर देंगे कि यार इसकी आवश्यकता है. And we will relate it with multiple examples, multiple real life scenarios, and how things are. This is the philosophy. और गौरव ने जो बात कही, देखिए भारतीय एक और हम लोग प्रयोग इसमें करने जा रहे हैं कि एनी लर्निंग comprises of three very many aspects: darshan, vigyan and vyavahar. So yeah, okay, there's a question. So Rahul, just from school, so school, see, there is a direct link of registration, but then you have to put up the details over there. So you reach out to your principal, and the admission form, the enrollment form is at rethinkindia.org. I showed you on the screen. There is an elaborate enrollment form here, NEET 2024. But इसमें आपको ना अपने विद्यालय की सूचनाएं डालनी होंगी. It's better that which school you are from, Rahul? You can come and speak out. We would love to have some interaction. Yeah. Balbhati Public School. Okay. Madam Meenu Goswami. Madam Meenu Goswami is your principal, huh? Yeah. You can come on, switch on the camera, Rahul. We'd like to interact with you. Break out your inhibitions and come on the camera. We can have a discussion. So while the registration form is out here, but we would, because your faculty coordinator details have to be put in, no worries, that's not an issue. So आप अपने जो faculty coordinator हैं biology के, उनके माध्यम से, मतलब they should be in the information, because हम लोग बहुत सारे emails, आपकी progress reports, so हम लोग ये create नहीं करना चाहते कि स्कूल अलग है और ये प्रोग्राम अलग है. ये स्कूल का ही प्रोग्राम है. हम लोग तो स्कूल के आपके जो टीचर्स हैं उनके हेल्प के लिए उसको एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं. So that is why your principal's email ID and details, if you will see this form, this is a very elaborate form. So your faculty coordinator and your principal's details have to be put in over there. I think Ahmed Hamza Khan ma'am also has a question. Yeah, please come on. Yeah. Sir, I think Good evening, committee. Yeah. This is Ahmed Hamza Khan from Ryan International School, Shahjahanpur. Yeah, I do have a question. Ki, if I've enrolled in this course, like it is for the 2 years, so what will be the structure of the syllabus? हम लोग मतलब कब कितना syllabus complete करेंगे? See, generally the protocol which goes on कि भाई 11th का जो subject है वो 11th में ही कराया जाएगा. yes. और 12th, so at par with the school also, so overburdening नहीं करनी है. But हाँ, आप मतलब हमारा जो structure है कि भाई पहले तो NCERT की first layer of reading is the first one, right? Then the second layer will be your concept level testing, and then NEET level questions pertaining to that subject. आज analytics इतनी ज़्यादा strong हो गई है कि we know for the last 10 years या whatever कि भाई इस subject से क्या questions आ रहे हैं. So both CBSE and then the NEET level. So timelines will be at par with the school itself, so that आपका schooling or NEET goes hand in hand. So we'll try to make it in sync with your school curriculum as much as possible, and whatever topics we are teaching you, as Raghav sir said, that it will be in first the NCERT reading has to be a must, and then building upon top of it with concept level videos and interactive quizzes, and then the test series, the questions of NEET, because that practice has to be very, very thorough. So our approach would be definitely that from concept to questions and questions to concept. So back and forth, to and fro, that we would be giving you. और थोड़ा हम जानकर ना स्कूल से पीछे ही चलना चाहेंगे, जिससे कि जो स्कूल की आपकी पढ़ाई हो रही है उसके बाद में आपको जब डबल लेवल पे आपने एक बार स्कूल में पढ़ लिया, आप एक बेस्ट लेवल पे, तो थोड़ा सा हम एक हफ्ता थोड़ा पीछे चलेंगे. And I think Gaurav would like to add upon further with his experience, so if he wants to come. Gaurav. सिलेबस स्ट्रक्चर के बारे में ये रहेगा कि हम अगस्त से चालू कर रहे हैं, एंड 11th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी है दैट वी विल बी कंप्लीटिंग बाय जनवरी लास्ट और फरवरी मिड. दैट इज द टाइमलाइन अगर मैं मतलब कोचिंग के पर्सपेक्टिव से आपके सिलेबस कंप्लीशन करता हूं. एंड देन इन फरवरी और स्कूल एग्जामिनेशंस आर देयर, एंड वंस द स्कूल एग्जामिनेशंस आर ओवर इन फेब, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ये बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके मार्च में ही होंगे, इस बार जून में चलेंगे. March will be मतलब schools में चालू हो जाती है classes, class 12. So from March we will start your class 12, and this course your syllabus will for class 12
will complete by August 2023 और August 20 उसके बाद revision test series till the time your NEET examination. तो जो अगस्त theoretic- 2023 आप कह रहे हो कि तो यानी एक साल आपको पूरा रिवीजन को मिलेगा 2024 के हाँ NEET मतलब में। अगस्त से सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्लास। Absolutely, that's the way to go because in NEET what we say that you have to give 3-4 rounds of the syllabus. Yeah. Because that is the core to it, that how well you know your subject, your course, your syllabi. So our approach would be that we would be having sessions of revision with you also, and in addition the capsules of the courses. Once the syllabus is covered, then we would like to have various capsules of revision for you. और थोड़ा हम लोग स्लो चलेंगे बिकॉज काफी टाइम है, तो बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि कुछ रियल लाइफ डॉक्टर्स, रियल लाइफ Yes, we'll be पैथोलॉजिस्ट, bringing अलग अलग in- स्पेशलिटीज के Bringing वो भी guest आए doctors. उनकी जर्नी से, तो थोड़ा आनंद से चलेंगे, बहुत ज्यादा भागने का हमारा कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। और बिकॉज क्या है कि अगस्त ना सितंबर अक्टूबर तक इट विल ऑल हैपन विदाउट एनी प्रेशर फॉर दैट मैटर। Absolutely. Okay, very thank you sir for resolving my query. And one more thing was like कि अगर by chance it is not possible for us to join 7 days a week all the classes, I mean like कभी ना कभी तो 2 साल में हो ही जाएगा, क्लास छूट गई तो उस क्लास का रिवीजन हम कैसे करेंगे? Classes will be recorded, Yes. sessions will be recorded. तो अगर आपकी वो क्लास छूट जाती है तो सेशन आप रिकॉर्डिंग वहां से देख सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का ये सबसे अच्छा फायदा है कि क्लासेस अगर आपकी मिस हो जाती है तो जो भी पढ़ाया गया वो रिकॉर्डेड सेशन आपके पास है, then you can see the recordings. Okay, very thank you sir, very thank you sir. या Very well said. And besides, we would be having an interactive 24/7, as we said, a proctored and peer learning ecosystem. So wherein we will be, hand-holding the students who if you missed out a class, offline also after the class. So you can, have interactions with us also, and we'll be sharing the recorded sessions, as Gaurav sir said very rightly. और एक और बात यह है कि हर जो सेशन होने वाला है उसका 1.5 घंटे का 90 मिनट है, तो पिछले सेशन का 15 मिनट का जो रिकैपिचुलेशन है दैट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो जनरली वी वुड नॉट से कि भाई आप मिस करो, बट एक क्लास मिस कर दी तो अगले क्लास में उसका रिकैपिचुलेशन से वो पिकअप हो जाएगा लाइव। तो बट इफ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर्स को दिवाली पे भी लीव नहीं मिलती है, तो डॉक्टर्स बेचारे बहुत ही ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन इन ट्रू डॉक्टर, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ये है कि भाई बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी क्लास मिस होनी ही नहीं है, घर में बैठे हैं। अब अगर कोई पावर आउटेज हो गया, वो those are some remote SOS conditions. And I would like to add in here, that when work, you start enjoying, work doesn't remain work, it becomes play. So similarly, studying, when you get fascinated, when you enjoy, when you love the love of learning, आपको क्लास मिस करने का मन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे यार ये क्लास मिस कैसे हुई? It is not a class. It just flows in your reflex action. That is what we want. Inculcate the self-learning. और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि डॉक्टर तो पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे पर्चा लिख देता है बेचारा। सो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो वो लिखवाते हैं कि भाई आर यू अ डॉक्टर। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि एयरप्लेन में कोई घटना हो गई तो भाई इज देयर अ डॉक्टर अराउंड। सो इट्स अ 24/7 प्रोफेशन। इसीलिए हमने सिंबॉलिकली इसका जो पूरा इकोसिस्टम रखा है कि भाई इट्स अ काइंड ऑफ अ फुल इन्वॉल्व्ड जर्नी। दैट्स द होल आइडिया। या So I think we are through with everything. It's almost 53 minutes odd. और बाकी कोई questions हैं तो you can write back to us. And आपको Zoom से हमारे email IDs वगैरह मिल गए होंगे, तो enroll over there. अभी there is enough time. 1st August will be starting swift briskly. Lot many schools are shortlisting their candidates. सबसे important challenge जो है, because हम लोग इसको एक अलग Super 30 टाइप का बैच ही रखना चाहते हैं कि वो रियली वेरी 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 सीरियस, क्योंकि बहुत रिकॉर्डेड मटेरियल ऑनलाइन है, बट मजा तो है लाइव का, आपके साथ गप लड़ाना, आपके साथ बात करना। एंड आवर पेडागोजी इन्वॉल्व्स कि भाई अ काइंड ऑफ जो मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, योर प्रोफेसर टेल्स यू दैट बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू रीड दीज पैराग्राफ्स योरसेल्फ एंड कम बैक, बिकॉज
3 रीडिंग्स में आपकी एक अगर प्री रीडिंग है तो आपका एक स्कूल ने आपके टीचर ने पढ़ाया, फिर आपने खुद से रीडिंग करी, और फिर जब हम यहाँ पर एक बड़ी पैराग्राफ लेवल और एक एंड वी वुड बी प्राइमरीली यूजिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट। हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि हम कोई बॉन्ड है, हमने कोई बड़ा पीपीटी बना लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। वी विल बी फॉलोइंग वेरी वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, रूडिमेंट्री बट विद अ फ्यूचरिस्टिक विजन। अगर हमें कहीं वीडियो दिखाना है तो हम जरूर दिखाएंगे उसमें आपको कि सेल में कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्शन कर रहा है, कैसे वो पावर हाउस है। बट जो बेसिक है वो आपकी एनसीईआरटी है, उसके ऊपर जो बिल्डअप करना है वेरी ओपनली, वेरी ट्रांसपेरेंटली, इन अ लविंग फैशन विल बी डूइंग इट। और बीच में हम लोग चाहेंगे कि कुछ कुछ ब्रेक होए, कुछ लाइव एक्शंस हो, 15 मिनट के लिए कोई अच्छे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आ गए, और इंटीग्रेटिव मेडिकल साइंसेस का समय है, सो हाउ दे यूज इट, तो यू विल गेट अ रियल टाइम पर्सपेक्टिव इनटू द होल जर्नी। तो 2 साल की है, जैसे गौरव ने कहा, बहुत लंबी मैराथन है, तो इसमें रुक रुक के बिना थके, समय बहुत है हमारे पास, और डरने की जरूरत नहीं है। डरना, जो डर फियर बेस्ड मार्केटिंग है, वी आर नॉट हियर, इट्स हाईली अचीवेबल। You just need diligence, a basic level of intelligence, but very high degree of diligence, because diligent doctors, that is what is the perspective out there. So I think we are done, Dr. Gaurav. Absolutely. Anything else? We can close today's session, and if required, we can meet up again on other perspective of it all. और एक बहुत ही बड़ा जो एरिया हम रखना चाहेंगे, we would be training you for a mix of career options also. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मुझे याद है कि जब हम अपनी तैयारियां कर रहे थे कि भाई अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, नाउ दिस इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन कि भैया 2 साल हमने मेहनत की, और नीट की वो जो बेसलाइन परफॉर्मेंस है, जो हमें कॉलेज चाहिए था या जो हमें वो चाहिए था, भाई यंगस्टर्स हैं हम लोगों को पैशंस हैं, हम लोगों को लगता है हमें सब मिल जाए, तो भाई यू कैन बहुत सारे करियर पाथवेज हैं। वंस यू आर विद द बेसिक पीसीएम पीसीबी, बहुत सारे ऐसे करियर पाथवेज आज मॉडर्न स्पेसेस में हैं कि जहां आपको जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस प्रोग्राम में ही एडमिशंस लें, बहुत सारे अलाइड प्रोग्राम्स हैं, बट उसका रास्ता जाता है यहीं से। तो हम वो करियर काउंसलिंग, मल्टीपल फ्रंटियर्स भी आपको देंगे, सो दैट यू आर रिलैक्स्ड। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेहनत ना करो, आप टॉप रैंक्स ना अचीव करो। आर प्लेटफॉर्म इज नोन एज टॉपर्स टर्फ, तो हम लोग चाहेंगे कि टॉप रैंक्स पहले ही साल से यहाँ से आए, बिकॉज यू आर बीइंग टॉट एंड ट्यूटर्ड बाय अ टॉपर। सो वो तो रहेगा, बट देन देयर इज ऑलवेज अ फाइनाइट, होता है भाई 3 घंटे का है, कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ में इक्वानिमिटी रखनी, अरे ठीक है भाई, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। सो जो ऑप्शन रख के चलता है लाइफ में, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, Yes. so it's an integral, I would say, experience which we want to share with you, whatever we have come through our professional lives, our own competitive lives. That's the entire idea. So I think thank you very much for such a patient listening, and we hope that many of your queries would have been settled. So namaskar. Namaskar.